Thank you so much. How you pronounce your name? Rocio? Rocio? Yes. Rocio Perez? Rocio Perez. Rocio Perez. Is that Mexican, Puerto Rican? Which name? Spanish. Spanish? Oh my God. Yes. So I don't know a Spanish word that I only need. Now you know too. Okay. Rocio Perez. Yeah. Rocio Perez. You know what? Say what you say, like I used to have many Spanish employees in my businesses, and what's there are a few words. ¿Cómo está? What's it called? ¿Cómo está? How are you? How are you? ¿Cómo está? How are you? And what's it tomorrow? What we word said? Mañana. 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 Yeah, I know. And I told my mañana. Yeah, mañana, because they use that word mañana everything. Hey, when you are going to do this one? Mañana. Never say now. Okay, they always use the word mañana. That is so funny. Where were they from? Were they from Mexico? Mostly from Mexico. Yeah. Mostly from Mexico. Okay, interesting. Yeah. That is a very typical word, mañana. Yeah, mañana. So that's why I say I'll get to it tomorrow. I'll get to it tomorrow. Yeah, and you know what? Tomorrow never comes. You know that. Yes. And then you're waiting until tomorrow. Yeah, forever. and the moment say mañana. And I'm a Muslim. I'm originally from Pakistan, and in our culture, we say the inshallah. I mean, God, at God's willing, we will do it. Okay. The moment we say word, they use the word inshallah. That means God is going to do it. This is how I interpret. I have no plan to do it. Okay. That's how I interpret that one. That is so interesting, because we do have something like that as well. We would say, God willing, you know, if God wants, tomorrow I'll take care of it. So, in fact, the real statement is God's willing, I will do it. You know, that's the real statement, but they don't say it. They say, inshallah. You know, it's like the same word. I say, where are you? You is missing. You are going to do the work. You didn't even say anything from you. So right. Where's your responsibility? So I asked them to correct the statement. I say, hey, inshallah, I will do it. You know, I want you to say that, you know, so that's how we do it. Okay. Thank you so much. So you learned a little bit about my culture too. It's a similar, nothing, no difference much. Every culture is the same, by the way, you know. Yes, we all have our things that we say. There are very good people. There are very good people in every country, and there are very good bad people in every country, in every religion, and everywhere. It's the people actually screw up the whole thing, you know. I agree. Yeah. Okay. Okay. Rocio Perez, and tell me about yourself. Originally, you are from where? Originally, I'm from Laredo, Texas. My parents are Mexican immigrants. Okay. I'm first generation here in the States. Wonderful. First generation to college as well. How does it feel? Amazing. I mean, I think it's being a trailblazer feels extraordinary. I have nieces and cousins and family members that have gone to university and are in university right now because of that. And it's extraordinary to know that there's a legacy and there's an impact, and it's a beautiful thing. Wonderful. I'm on your amazing website. Customize leadership experiences that help organization, teams, individuals reach unstoppable level of success. Did you steal the word unstoppable from me, or I stole from you? I don't have no idea. You know, maybe we used it at the same time. Who knows? Oh, yeah. I have my word unstoppable right here in my book. You know why? Unstoppable 7 steps to becoming a more intentional leader. And I'm going to prove you right now. Okay. Just, you know that. 1 second. Okay. I'm going to, there we go. You are on my I'm full screen. You are watching me right now. Read this one. New Success Secrets, how to build, run, manage unstoppable success teams. I love it. I love it. There you go. Okay. That's fantastic. So whatever I said, I can prove you right away then and there. You showed me too. So we both actually cheated each other in unstoppable words. Okay. We should. And it's so fast. And we're also competing against Anthony Robbins as well. Okay. What that inventia mean? Inventiva means the genesis of something new, creation. Okay. It's something, an opportunity for us to create. And it came about one of those moments in life that really transformed me. I was diagnosed with a brain tumor at the age of 34. And I wanted to create something new, something that would touch, move, and inspire people in ways that only our mission vision can. There's a lot more meaning to it than a simple another word for you. It's not just a word. Yeah, I know. I got it. I see it. So have you seen all of my questions? I've seen some of your questions. Yes. Okay. Any questions on my questions?
Not any questions, Let me go ahead and make sure that they're in front of me right now. Okay. All right. Okay, I've got them right here. I love your questions, actually. Oh my I God. love the fact that you put in there, you're talking about more of our humanity, our gratitude, what makes us us. It's a wonderful thing. Got it. So I know you. right I know you answered the 2 questions to Avas already when you came on a call with him on the other day. Yes. Okay. By the way, was wonderful. How was the call? Give me the honest answer. You know why? Because he is my student. I want to make sure we improve it. That's the purpose of how he could have done it better. Right. You know, it's fascinating. You're the first person. I've been interviewed by hundreds of people. Okay. You're the first person that has the system that you have. Oh my God! You already gave me the testimonial. We can end the call. We can end the call right now. I already got it. That's what. Right now, right? Right. No, it's fascinating. I was fascinated by it. I'm like, wow, what level of detail from the moment that we connected on LinkedIn to the moment that with all of the emails and messages, and then also the interview. I'm like, wow, most people don't do that. Yeah. And most people, I would say 100% of people don't do that except for you. Except for me. Except for you. Yeah. Okay. I know you. You know, one of the things that I would love to see on the background, I would love to see your brand when he does the interviews. I saw a green screen. Oh, okay. Okay. See, that's we will not improve. We don't know what we don't know. Thank you for sharing that one. My pleasure. And here is the best part. You want to know this? Yes. He is here. Unmute. Avas, unmute. Yeah, of course. Avas, unmute and put on your screen right away. Turn on the video. Faisal, you're coming on screen too. Abrar, you're coming on screen too. Turn on the video and unmute yourself. Avas, your video is not on yet. Okay, here you go. I told you my team is watching. There we go. Yes, your team is watching. That's fascinating. Okay, that's it. We are not talking to any one of them. I just wanted to show I was not making up the statement. I told you my team is watching. There we go. Fantastic. This is how much you care about how much you share with us. We want to learn from you. This is your show. We are just the host. We got it. Okay. So there are 2 questions he asked you. You already answered it. Help me to come up to speed very quickly. The first one was, how young are you? How young am I? I'm in my mid-40s. I'm 45. 45. Okay, very good. And the second was, you wanted to show the book. Which book you are going to show today? Well, I'm actually going to be showing one of Eckhart Tolle's book. I talked about As the Men Think It. And I'm actually loving this one right here. Okay. You can see it right there. Eckhart excellent. Tolle's Awakening Your Life's Purpose. Living on Purpose. And okay, understood. And you are also an author yourself. You have, by any chance, you have your own book nearby to you? Okay. Oh my God, look at this. So I'm going to ask, here is my question. I'm going to ask about your own book too. However, as a separate question, I will add that question on the fly. And you please mention about your book when I ask that question, not mix up in anywhere else, And I also have my game. I have a mind shift game. Okay. Can you put on a camera? I can only hear I can only see half of it. Okay. Put it. Okay. It's pretty big. Yeah. Okay. Yeah. That's it. What is this? It's a game? It's a game. It's a game of how to transform your mind. And it's helping people all over the world to become the most extraordinary version of themselves. How I can play that game? You can play that game by communicating with me. It is a game that we play online, as well as a physical copy of a game as well. Okay, is that kind of Xbox something like this game, or just an online app? No. This is a game. It's a leadership game. Okay, let me just show you real quick. So we have cards that go along with it. These are affirmation cards, how to build your confidence, how to take courageous actions, expand your vision, and so forth. Okay. Those are the things that we're doing with the Mindshift game. Okay, excellent. I love it. I love everything what you're just showing. So how many leaders are playing this game with you already? Right now, we've had thousands of leaders play this game in different capacities. And right now we're launching this particular version of it. Okay. And how much it costs, by the way?
This is $1,000 for this version of the game. Oh, okay. Okay, good. And how many people can play at one time? At one time, every person that has a game plays. It could be one user. We do have an executive package that has for 4 team members as well. That runs for $2,500. Okay, okay. You want more people, thousands are buying it, so you must be very rich by now. So I already looked at your money, you know that. So we love it, you know. We love helping people. Our way of measuring success is the number of people that are actually transforming their lives. 100%. It has a ripple effect in the Absolutely. world. So you want more people playing that game? Because we are all playing a different game right now. Playing the game. Yeah. Everybody's playing their own game. Yeah, that's it. Everybody can win. Everybody can win. So, and their results are their results. They are improving it themselves through this game. So let's have the interview first. Then at the end, remind me. I may even able to send you some customers for that. And some mean it could be 1, it could be 0, or it could be 1 million people. It could be 1 million customers. Or it could be 1 million. It could be huge. So potentially, I love to have a separate call, not on this call, and to discuss how we can work together to send you a lot more, because we need to play a different game which has diversity and thought leadership included. And right now, our diversity is very questionable everywhere in the world. It is. It is. And the inclusiveness aspect of it as well. Yeah. Yeah. Okay. I'm ready to go live unless you have any question for me. I'm ready. Okay. And you will have a plenty of time to actually answer your questions. And you already know the time of every question. So total interview is 15 minutes only. And I will only ask the question, you answer it. And I will not comment on the answer, even though I may or may not know the answer. I will not comment. I just want each question as a separate answer, because we take into a smaller micro content. Then I don't want to be part of the commenting on that one. I just you. Okay. Okay. Got it. Thank you. Thank you. And let's go. I will bring you in a moment. Okay. Rocio Perez. Is that right? Rocio Perez. Yeah. Okay. Perez. Okay. Greetings and welcome to Growth Hacking Secrets. I'm your host, Mohammed Siddique from Atlanta, Georgia, and the co-author of New Success Secrets, available on Amazon. On this episode, we have a special guest, Rocio Perez. Rocio is an author, speaker, coach, trainer, and diversity thought leader. Please join me to give a warm welcome to our guest, Rocio Perez. Rocio, welcome. Thank you so much. It's such a pleasure to be here with you today. Likewise, feeling is mutual. Let me start with this. Where were you? What happened? Who were you surrounded with that inspired you to do what you do today? Well, I've been doing leadership development my entire life, helping people. I grew up in extreme circumstances, poverty, abuse of all kinds. And that's what inspired me to work with individuals. As I turned the corner in almost 11 years ago, I was diagnosed with a brain tumor. And I said, what would I do if this was all I have to live? And that was to continue to impact the lives of individuals, helping them tap into their fullest potential and live a very fulfilled life. That's essentially where everything started. Inventiva was born from that. That is the name of my company, as it helps people tap into what's possible, probable for them, and create their own reality. What are the top 3 mistakes to avoid? Listening to other people that have no idea what's going on in your business. Number 1. Number 2, do your homework. Do your homework, understand your market, understand your audience, the psychographics, demographics, geographics, all the graphics, understanding to the T. And then the third thing is to ensure that you take consistent action, consistent and persistent action. A lot of people don't take it. So that's another mistake, understanding that you can make it or break it. If you don't have that level of commitment, a lot of people are curious. A lot of people may be interested, and it's like that squirrel. That next thing comes by, you go after it. You must be committed to what you're doing, no matter what. Give us one more.
If you one more, wow. So the next one is to understand how you can scale your business. What are the products? What are the services? What do you take it? So one second. I apologize for being interrupting. What's the mistake to avoid? Not what to do, okay. what not to do. Okay, That's the more perfect. important. Yeah. What people do. Yeah. Thank yeah. you. What not to do is not understanding your team. Not understanding your team. If you don't understand yourself, first, it starts with us. If you don't understand yourself, you don't understand what triggers you, what excites you, what moves you forward, what are your patterns that people are going to come in, they're going to trigger you. If you don't understand you, you cannot understand them. So avoid not being informed about yourself and not being informed of what makes people move forward. What is your greatest failure story? What did you learn and how did you recover from it? My greatest failure was trying to help everyone. I was coming off of stages and I wrote my book and I said, okay, how can I help people? How can I help people? And I was helping 144 people at one time, just me alone, because they wanted Rocio, they wanted me to coach them. I was coaching people 7 days a week from 4 a.m. at times to 9 p.m. There was no light of day for me. That was not quality of life. Not putting myself first was probably one of the biggest failures because it impacted my family, it impacted my health, it impacted every single area of my life. And it was unsustainable. I could not scale my business from there. What I did is I put all my secrets in here of what people can do to become unstoppable. And I said, okay, take it from here. You want more of Rocio? Here you go. And go do your own work on your own. This is the book that keeps on giving. You can go through this book 100 times. And then you'll get something different every single time. That's one of the things that I did. What are your top 3 success secrets others can model from? Live with passion. To me, that is something that's so important. Don't chase the money. Live in your authentic self with passion. I would say gratitude. That's a secret that that people can connect with as well. People don't really look at what gratitude is and what it does for us. And then having something that you can have a success ritual. For me, getting up in the morning, meditating, taking care of myself first, give to myself first before I can give to others. It's about the whole person before the business. The business flows from there. One more. And I would say the final thing is to continue to develop yourself. Develop constantly as a leader. We're never there. We're never going to get there. We're constantly evolving. We've never been here. We haven't been here even in this moment. You're not who you are. I'm not who I was 20 minutes ago. We're constantly evolving as human beings. Everything is evolving about us. Always learn. Do your own work. We are about to move into lightning round. That means quick question and quick answer. Are you ready? I'm ready. What are you grateful for today? I'm grateful for life. How young are you? I'm 45. You are not 45. You are 18 years old with 27 years experience. That's right. I like that. I am 18 years old with 27 years of experience. I'll use that next time. What you want to do when you grow up? I want to be able to touch, move, and inspire people all over the world, and I want to be that woman worth becoming. How do you overcome and challenge life throws at you? I get myself centered anytime that things happened. Like, how do I bring it back to me? I auto reflect to see what happened, what didn't happen, what can happen differently, and what is my gap for me to understand and grow from. How do you start your day? I start my day by meditating, getting myself centered. I love exercising, taking care of my body first and foremost. And after a nice shower, maybe a breakfast, depending on the day, then I get started. What is the advice you will give to younger yourself? The advice that I would give to my younger self is to live with passion. Ask for help sooner. I would definitely ask for help sooner and trust people along the way a bit more.
Once you have a revenue generating idea, how do you convince your significant other? I think the most important person to convince is myself. It's like, how do I convince the team and what we're doing so that we can continue to move forward? I know that the significant, I'm single, so I wouldn't be able to answer that question. What is the impactful business book you have read and what did you learn from it? Can I see the book, please? Yes, Eckhart Tolle, Awakening Your Life's Purpose. To live on purpose, with purpose, on purpose, and everything is intentional in this world. If we want something, we must create it and get in alignment with ourselves first. I understand that you are author of a book too. Can I see your book? Why someone should read it and what will they will learn from it? Most definitely. So Unstoppable, 7 Steps to Becoming a More Intentional Leader. Why they should read it. It provides insights on self, how to hack your mind so that you can have even greater success, in addition to helping you auto-reflect on what's going on in your life and what you can do to create that roadmap for success. So, and I understand you also have a game. Tell us. I do have a game. I have the Mind Shift game, and the Mind Shift game was can you put well on the front of a camera? It's only half. Okay, yeah, there we go. It's too much. Take it back a little bit. Yeah, now I can see it. There go for it. Start over, all over. Yeah. Perfect. Yeah. Perfect. So the Mind Shift game helps people transform their lives. It helps them take even more courageous actions, build their confidence, expand their vision, powerfully step into what's possible and probable for them with the energy that is necessary to be able to bring things to fruition. People are playing this game all over the world and they are rocking their lives. Every single week, they're leveling up in every area of their life, which is beautiful. Why being impactful is important to you? I grew up in extreme poverty and circumstances, and why being impactful for me is that people thought I was a throwaway kid. People thought that somebody that was born in poverty and has lived what I have lived isn't worth it. I believe that each and every one of us has the capacity to be able to transform our lives as long as we're willing to put in forth the effort and the time necessary and have the support that is important to have in order for us to be able to transform our lives. Who is your living mentor and what's the impact? One of my living mentors, his name is Andre, and the impact that he's had, he's helped me think outside the box from where I've been to be able to connect me. What he talks about, we're taking the elevator ride. You've already done your work. We take the elevator ride all the way to the top. He helps me see outside of what's possible and probable. Would it be possible for me to interview your mentor? Most definitely, it would be possible. Okay, wonderful. Happy to have him as a guest, him or her as a guest, and appreciate the introduction. Thank you. What do you want to be remembered for? I want to be remembered for the impact, the ripples of my impact, the opportunity to connect with people and show them what's possible and probable for them. Who is your ideal client? Our ideal clients are people that are committed to their personal growth. They're individuals who are entrepreneurs, they're professionals, they may be that solopreneur, entrepreneur, they may be working for an organization. They know that there's another level and they're committed to getting there. We only work with people that are committed. How can we support you? Connecting with other amazing individuals. You can go right here with Inventiva Consulting. You can go ahead and connect with us. That is Inventiva Consulting. You can look at us up on LinkedIn as well. We're at Instagram and Facebook. We are about to wrap up. I'd like to have your few words about your today's guest experience on the show. Here's my question. What would you say about your today's guest experience on the show? I would say this is the only guest experience that I've had that has been so thorough, and it's been such a smooth experience. Thank you. What would you say as a final word? My final words is go after your life as it is the only thing that we have. Create your life, lead yourself, lead others, be intentional about anything and everything that you do in your world. Thank you so much, Rocio, for sharing your wisdom with us today. On the behalf of Growth Hacking Secrets community and our entire team,
We really appreciate you. This is Mohammed Siddique signing off from Atlanta, Georgia. Until the next episode, all good wishes. Rocio, let me say thank you so much. You are not as good as you think. You are better. You're wonderful. Thank you. Yeah. So I like to have a call with you. If you have a few minutes, we can talk right now, or we can have a separate call, because I want to have keep the time integrity in place. We still have 2 minutes left. We can schedule a call, or you have a few minutes, we can talk right now. It may take 10, 20, 30 minutes. Let's talk right now. Oh my God, look at this. Let me take a look. Yeah, I have 15 minutes max. 50 minutes, plenty of time. Let's go. How many more clients you want for this game thing and impactful? For this game? Yeah. Go ahead. Yeah. For how many more clients? How many more clients do we want? We want millions of people playing this game. We will have different versions of it. Okay. We're going to be building one in Spanish. Okay. That's the next one. Yeah. We will do a nice launch in September. So we're scaling it up. We'll be launching in Spanish. Because of your time constraints, brief question and brief answer that will help me to navigate the conversation. Perfect. Because I want to stay within your time limits, Got it. Thank you. Okay. So there's no limitation. It's like a SaaS-based online game. Is that right? There's no limitation on how many clients you can handle, There is no limitation on how many clients. We do have the game online and in physical form. Oh, okay. So whatever they like. So you charge them, remind me again how much you charge them? So for the game, it's $1,000 per game. Okay. And if we are sending you a new client to pay $1,000 to you, and how much would you pay as a referral fee to that? 10%. 10%? Great. That's a generous offer. And how $1,000 covers for how long? 30 days, 1 year, 2 years, or for life? Or they only pay one amount, or how that? No. Well, it depends on the game that they're playing right now. That's just the sale of the game. They do have a membership, a monthly membership that they pay as well. Okay. They want to go ahead and have online access to our community. Okay. Do you have that white label solution as well, or you just say it has to be your brand every time? Sometimes many companies work with the white label partners too. Most definitely. We don't have a white label option at this moment. Okay. Is that something doable or no? It's something that I can think about. I'll connect with my business partner on that. Okay. How many partners you are? Just one. Just one? Yes, myself and Gerardo, who's out of San Francisco. Oh, okay. Who is the decision maker? Both are decision maker, just one person? I'm the final decision maker. Ooh, you are the boss. I'm talking to the boss. Well, unbelievable. I'm the brand of the company. So Understood. Leave that to me. Understood. How if we do something like this on $1,000 just for me? I'm in a business for 30 years. I understand on what basis you come up with offering a 10%. Is there some certain base? How you come up with the decision that you're going to offer 10%? So the decision right there, that's market standard. It's market standard decision on that. Oh, okay. We do 10% for all of ours. And we've been part of affiliate marketing as well. And that's also been pretty standard at 10%. Okay, so you pay a 10% on the first transaction, or because there's some follow-up and additional sales, upsells, and all that stuff, you pay a 10% life of the account? We pay 10% on everything. On everything? Okay. Yes. So is there any flexibility if we perform certain level, then you can, change your mind to different number? Or is it? Yes, and that'll be a conversation that we can have separately. Yes. Okay. Wonderful. So in other words, what's after $1,000? What's the next level? 2,500. What's the next level? So the next level is 60,000 or 100,000. Okay. Depending on what we're doing. We will make a 10%. If I send you a $1,000 client on the front, and in theory, they end up in buying $100,000, I still will make a $10,000 from that client. Is that right? Yes. Okay, wonderful. Because based on the time integrity, I want to make sure we finish everything. We finish everything in 4 minutes. Let's schedule a call for 30 minutes together. And then we can discuss this in more in detail. And I love to work with you. I love your purpose, because our purpose is aligned. And that's why I want to work with you. Okay, wonderful. Let's go ahead and schedule that. You want to do it today? You want to do it today, or you want to do it some other day?
Let me go ahead and take a look at our time here. I have time at 10 a.m. Mountain Time. I have a Okay, 1 second. 30-minute window. 10 a.m. Okay, wonderful. This is good. 10 a.m. Mountain Time. Yeah, I understand That's it. midday. I know. I got it. 1 second. I have a meeting. I'm moving that meeting to out. If I can. Okay, it's done. Let me see. So you want to bring your partner on the call too, or you are the solo decision in that one at the time? You can bring. Let me see if he's available. Yeah, Since it's better because someone is a part of the decision. It's better to be on the same call, and they can ask any skeptical question they can ever come. That's fine. No. Right. So let me go ahead and see if he's available, and I won't know until another 2 hours if he's available. That's fine. And try, if not, if he is available later time, just text me on the number. I'm going to text you on where I called. You can text me, Perfect. hey, can we move our call to this time? If I can't make it the new time, then we will back and forth. We will come up with the time. It's a non-issue. No. Sounds great. Okay, I'm doing it right now. Okay, 12 o'clock call is already scheduled. My time 12, yours is 10, and speak to you then. Okay. Sounds great. Thank you so much. Have a great day. Have a great day. You too. Thank you. Have a great day. हाँ जी अवैस जी सर और शक्ल तो दिखा हाँ जी सर फीडबैक मिल गया जी सर फीडबैक सुनने तो नहीं हुआ पता नहीं क्या क्या उसमें वो इशू चल रहा है यार चलो कोई बात नहीं लेकिन रिकॉर्ड हो गया कोई मसला नहीं अभी रिकॉर्ड हो रही गल जी कर रहे हैं ठीक है मैंने उसको कहा कि वो मेरा स्टूडेंट है वो अभी सीख रहा है उसमें क्या इंप्रूव हो सकता है जो आपकी ऑब्जर्वेशन है बता दें ताकि हम उसको इंप्रूव कर सकें फैसल आपने बात सुन ली थी ना ये नहीं इसने मैं कोई ऐसी बात तो नहीं की जो गलत थी ना कोई हाइड तो नहीं किया ना मैंने कितना इंपॉर्टेंट है कि आप सच बोल रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है मैं उसको कुछ भी कह सकता था आई कुड इवन लाई टू एनीथिंग इफ आई वांट टू लेकिन मैंने नहीं किया व्हाई बिकॉज आई वुड नॉट डू दैट जब आप सही बात करें बेशक उसमें आपकी कमजोरी नजर आ रही हो ऑलवेज टेल द ट्रूथ यही मैं आप लोगों को कह रहा हूं ना कि आपने हमेशा सच बोलना है बेशक उसमें आप एक्सपोज हो जाएं हु केयर्स पीपल लव टू वर्क विद पीपल हु आर ऑनेस्ट एंड इंटेग्रिटी आप सारे कहते सारे फ्रॉड कर रहे हैं और अपने आप ने तो ठीक कर ला यार पहले दूजे ने फिर बाद ठीक करना शुरू करी जो ਤੁਸੀਂ ठीक हो गए तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪੀ ਤੋਂ ਅਟੈਚ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ you have to correct yourself first that's the number one thing rule number 2 follow the rule number 1 ठीक है अब उसने क्या बताया सारा कुछ ठीक था लेकिन इसने ग्रीन स्क्रीन लगाई हुई थी लेकिन पीछे वो कोई वर्चुअल इमेज नहीं था बेसिकली ब्रांड नहीं था ठीक है अब आपको पता चल गया हाउ कैन यू इंप्रूव बिकॉज यू बेटर आस्क until you ask nobody will tell you anything अब इसमें ये ठीक कर लेगा होपफुली नेक्स्ट टाइम ठीक है अब इसके बाद अगला कोई आएगा गेस्ट उससे मैं पूछूंगा हाउ वाज एक्सपीरियंस वो अच्छा नहीं था तो उसने मेरे पास आना ही नहीं उसने वैसे ही भाग जाना है ये तो पक्की बात है वैसे ही अंडरस्टूड है अगर वो तो मसला ही कोई नहीं खुशी है तो आई है ना ये तो अंडरस्टूड है इंप्रूव करने की अपॉर्चुनिटी तो आपको इंप्रूव करना ही करना है हमेशा उससे पूछना है अब अगली दफा कहेगी अब ऐसे ऐसे बहुत हंस हंस के बातें कर रहा था हिल बहुत रहा था हाथ बड़े हिला रहा था वो परेशान हो जाता है बंदा ठीक है मैं आपको कितनी दफा कहता हूँ कि आपने खुद मूव नहीं करना हैंड मूव कर सकते हो आपने खुद मूव नहीं करना जो बंदा खुद मूव करता है कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है उसका फैसला आप अपने अब्बा से पूछ लेना ये बात ठीक है जब आप किसी से बात कर रहे हो इन्वेस्टिगेटिव बात भी कर रहे हो जब क्वेश्चन कर रहे हो किसी को अगर आप मूव करके ऐसे हिलुल करके इधर उधर देख करके आंखें रोल करके आप बात कर रहे हो तो यू शेकन दे आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया है यू आर ट्राइंग टू कम अप विद द आंसर ठीक है
लेकिन अगर आपने जवाब कॉन्फिडेंस के साथ देना है, बेशक आप वही काम कर रहे हो अंदर से, लेकिन अगर आप उसको स्टिल होके कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर करोगे तो आपका आधा जवाब छुप जाएगा। बात वही है, हाउ डू यू डिलीवर इज दैट्स एवरीथिंग। वैसे समझ आई कि नहीं? अगर आप गौर करें, मैं जब किसी के सामने, लोग रोबोट भी कहते हैं कि ये रोबोट बन के बैठा हुआ है, ये रोबोट की तरह बात करता है, मैं सब कुछ सुनता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन उनको असल में पता नहीं है ना। मैं उनको खुश करने के लिए तो इधर उधर नहीं देख रहा ना। मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो मेरा सामने बंदा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, मुझे उसके साथ बिजनेस करना है। जो बात कर रहा है मैं उसके साथ बिजनेस ऑलमोस्ट नहीं करना, ऑलमोस्ट रेयरली वंस इन अ वाइल, साल में कोई आ भी गया हो केयर्स, ठीक है। आप शुरू में से थे इस कॉल पे, शुरू में से थे फैसल? जी सर। उसने आते ही मुझे टेस्टिमोनियल दे दिया, हालांकि कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था अभी। बिल्कुल बिल्कुल सर। हैं? आपने कहा कि इस तरह का जो मैनेजमेंट है वो मैंने सिर्फ आपके पास ही देखी है, थ्रू आउट गेस्ट को लेकर आना और इस तरह से कॉन्टेक्ट करना, और कहीं भी नहीं देखी है। दैट्स ए कम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ अस एज ए टीम। मैं अकेला थोड़ी कर सकता हूँ, पॉसिबल भी नहीं है, बिल्कुल हैं? अब बिल्कुल आपको सर। इनकरेजमेंट मिलती है ना, एक तीसरा बंदा जिसको आपको एक्सपीरियंस है, उसको एक्सपोज हुआ है, जब उनके एंड पे पता चला इसमें सारे ही पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए पाकिस्तानियों का इंप्रेशन कैसा पड़ेगा, आप जरा गौर कीजिएगा इस पे। That's why I tell you, everyone in Pakistan and outside, you are the ambassador of the country. Why? Because we are dealing with the foreigners. उसको इस्लाम की, कुरान की आयत दिखा के नहीं करना, वो तो उसने पढ़नी नहीं है, वो तो उसका मजहब नहीं है। आपके एक्शन का जो रिजल्ट है उससे पता चलता है बंदा कैसा है। बिल्कुल सर। That's how you improve yourself. जी इब्रार साहब, आपको क्या समझ आई? हाँ जी, चलो अब डन, यू डन, ये आपकी आईडी खत्म होगी। अब ऐस आपको क्या समझ आई है? सर ग्रीन स्क्रीन नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। हाँ, और ग्रीन नहीं, ग्रीन स्क्रीन भी होनी चाहिए, लेकिन ग्रीन स्क्रीन होगी तो इमेज ऊपर लगाओगे ना। ग्रीन स्क्रीन नहीं होनी चाहिए नहीं है, ग्रीन स्क्रीन होगी तो इमेज लगेगा ना, ये क्या बात कर दी आपने। और अगली बात आपके लिए जरूरी है कि आपने हिलना कम है, हैंड मूव कर सकते हो, खुद नहीं हिलना, ये ट्रेनिंग है, ठीक है। हम वैसे भी क्या करते हैं, हाँ भी क्या ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे करते हैं ना। वो कहते एक टके दी जुबान नहीं हिलानी है और 2 किलो का सिर हिला देंगे। फैसला ऐसे ही है ना। बिल्कुल सर। ठीक है, आज वैसे ही बहुत होगी सबके सामने, ये हुने ग्रुप च जा रही है कॉल, ठीक है ना। वो सारे वैसे तो खुश है, उन्हें कहना इन्ना के दिन पता है इन्हें की सिखाना सानू बड़े होके। ऐसे ही सर, बिल्कुल ये सारे सामने बेइज्जती होगी, कितना फील होएगा वैस? सर कोई है इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं लूज हुआ। बिल्कुल सर। बंदा ढीठ होना चाहिए तो बाकी खैर है सारी, यही कहते हैं ना पाकिस्तान च, हैं? बिल्कुल सर, ये कहते हैं। हाँ जी इब्रार, आपकी ऑडियो ठीक होगी या नहीं? हेलो, नहीं, ओके ओके, वी आर डन। मैंने उसको सेट कर दिया ना सेल के लिए, ये बताएं। बिल्कुल सर। कर दिया ना? बिल्कुल सर, कर दीजिए। अब 10% से नीचे तो जा नहीं सकती, उसके दिमाग में मैंने डाल दिया है। आप ऊपर के लिए फ्लेक्सिबल हो क्या? नहीं कहते हाँ फ्लेक्सिबल है, बाकी तो गल खत्म होगी। जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो तो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना। जी जी। मैं तो 80% जिसमें आई गेट पेड, दे गेट ओनली पेड 20%, दे डू द वर्क, आई कैन शो द एग्रीमेंट्स, मुझे तो कोई मसला नहीं है। 50% वाले कितने हैं, मसला ही कोई नहीं। जिसमें कंपनी में इक्विटी दे रहे हैं वो भी मेरे पास हैं। मैंने कहा आप किस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ये वाले की बात कर रहे हैं 80% वाले, या 33% इक्विटी की बात कर रहे हैं, या किस वाले की बात कर रहे हैं? आई डोंट नो, यू पिक व्हिच वन यू वांट टू डू, ठीक है। अब इसके साथ कॉल में क्या होने वाला बताएं आप मुझे। सर हम इसे कहेंगे
ये आपकी इज दिस योर बेस्ट ऑफर, और उसके बाद जाहिर बात है वो उस पे मजीद उसको रिव्यू करेगी कि मैं इसको मजीद में किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ सकती हूँ और किस तरह से इसको मैं थोड़ा सा अप कर सकती हूँ। मैंने उसको मैंने जो उसको पार्टनर को लाने के लिए क्यों कहा है, मैं अक्सर नहीं कहता, उसने खुद कह दिया मैं डिसीजन मेकर, मैं कहना फिर ही पार्टनर को ले आओ, क्यों कहा है? जी सर बिल्कुल। क्यों कहा है? हैं? उसने कहा मैं डिसीजन मेकर, मैं ही बॉस हूँ, मैं ही अथॉरिटी, लेकिन मैं कहना पार्टनर को लेके आना। अगर टाइम वो नहीं मैनेज कर सकता मुझे बता, टैक्स मैसेज कर देना, मैं इधर उधर मूव करके उनको टाइम तो निकाल ही लेता ना बंदा, बेशक वो अगले महीने हो, फर्क क्या पड़ता है, टाइम तो निकाल लेता। मैं ये थोड़ी कहा आज ही करूंगा। हाँ, क्यों कहा है पार्टनर का? सर वो ये भी इसलिए कहा है कि उसका पार्टनर हो सकता है कोई उसमें ऐसा पॉइंट बता दे या उससे ऐसी चीज निकल आए जिसमें पॉसिबिलिटी हो कि वो अपग्रेड हो जाए इसमें रेफरल में। हाँ, हाफ आंसर ठीक है, हाँ ठीक है, लाइन ठीक है, लेकिन मैं क्लैरिफाई करता हूँ ताकि सारों को समझ आ जाए। हाँ जी वैसे आप बताएं। सर वो जो है वाइट टेबल का नहीं जानते, शायद उसका पार्टनर जानता होगा। अच्छा, और अबरार आप देखिए आपकी आइडिया ठीक हुई कि नहीं? सर हाँ जी जी सर, पार्टनर्स का जब आ जाएगा साथ होएगा तो बेहतर मेरे ख्याल से डिसीजन आप ले सकेंगे और ज़्यादा उसको चांस आएंगे कि अगर आपने इसकी परसेंटेज ज़्यादा करनी है तो मुख्तलिफ एंगल से आप उससे सवाल पूछ सकते हैं, जो उसको नहीं पता वो बता देगा, जिसको नहीं पता वो बता देगा। अच्छा, ये भी ठीक है किसी हद तक, लेकिन असल बात और है जो फैसल ने बात की उसमें एक्सपेंड करते हैं ताकि सबको समझ आ जाए। होता क्या है कि पार्टनरशिप में एक होता है गुड कॉप, एक होता है बैड कॉप। इसका मतलब पता है किसी को, गुड कॉप बैड कॉप? यस सर, ये इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह करते हैं, एक गुड कॉप जो आपका दोस्त बनता है, आपसे मतलब सीधी तरह करेगा, पूछेगा। जो बैड कॉप होता है वो आपको इस तरह ट्रीट करेगा जिस तरह सख्ती थोड़ी सी रखेगा अपने लहजे में, और बिल्कुल आपको सर फ्रेंडली होने। ठीक है, लेकिन इस केस में थोड़ा सा उसका मतलब डिफरेंट है। पार्टनरशिप में ये होता है दो पार्टनर होने चाहिए आपके बिजनेस में, हमेशा पार्टनर होने चाहिए, अकेले नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये अगर आप कहें ना ये मैं डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ, दैट्स नॉट गुड फॉर यू, नेवर से दैट। ठीक है, ये निगोशिएशन के लिए अच्छा नहीं है। उसके लिए मैं सिखाने के लिए कह रहा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो कह रहा है मेरे फायदे की चीज बता रही है वो। लेकिन ये एज ए कंपनी, बेशक आप अलोन ओनर हैं, नेवर से दैट, नेवर से लेट मी थिंक अबाउट इट, दैट्स नॉट गुड, दैट मीन यू कांट मेक अ डिसीजन। ये वर्डिंग बड़ी पावरफुल है। मैं क्या कहता हूँ, लेट मी डिस्कस विद माय टीम। टीम में कौन हो सकता है? आपका फ्रेंड भी हो सकता है, अपने आप से बात करना भी हो सकता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन भी हो सकती है, आपकी बीवी भी हो सकती है। फैसल के अंदर बीवी को थोड़ा नहीं मिली नहीं अभी तक। अब मैं कहने का मकसद ये है कि वो कोई भी हो सकता है, आपका माइंड चेंज भी हो सकता है, बट दैट्स मोर पावरफुल। ठीक है, पार्टनर आया अगर वो कहे कि मैं तो रेडी हूं, मेरा पार्टनर नहीं मान रहा, दैट्स ए बैड कॉप। जो नहीं मान रहा, मैं तो करने को तैयार हूं लेकिन मेरा पार्टनर नहीं मान रहा, जिसने ना करनी मैं कर लाया कॉल ते होने लाया उसकी वजह के उसके ऑब्जेक्शन मैंने उसी वक्त रिमूव कर देने कॉल में। ये उसको क्या एक्सप्लेन करेगी, मुझे क्या पता। समझ आ गई? इसलिए उसको क्या एक्सप्लेन करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल शी कैन एक्सप्लेन 100%, इट्स नॉट हर एनीबडी। जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपको पहली दफा सारी समझ आ जाए और सारा आप उसको एज इट इज कम्युनिकेट कर लें, तो उससे फिर कोई पता नहीं की शायद होगे, पॉसिबल नहीं है। इंसान मैक्सिमम 30% रिटेन कर सकता है, और 70% तो उन्हें लूज कर देना जो भी मेरे को सुनना है। फिर उन्हें वर्ड अपने वाले इस्तेमाल करने जैसा तरीका अपना एक्सप्लेन करना, हर बंदा एक्सप्लेन करना अपना तरीका है। ठीक है, ये भी उससे एक लाइन का टेक्स्ट मैसेज भेजे, गड़बड़ होगी ना फिर उत्थे वो मेरे को आएगा ते ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫੌਰਨ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਮੈਂ ਅਦਰ ਡੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਆ ਸਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਮਾਈਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਬਸ਼ੀਰ ਵਾਲੀ ਡੀਲ ਦਾ। जी 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 We lost the deal।
because I did that one Exactly, mistake. sir. ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸੋਲਡ ਸੀ ਸਾਰਾ 100%. Exactly. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ the way he explained to his CEO, that's where the broke happened. ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ. अच्छा, चूंकि उन्होंने क्या, आई एम द सोल ओनर, मेरा कोई पार्टनर नहीं गा, एंड आई मेक माई ओन डिसीजंस, देन आई डोंट हैव टू टेल एनीबॉडी टू ब्रिंग योर टीम. समझ गए? लेकिन उसने कम्युनिकेट इफेक्टिवली नहीं किया कि मैं डिसीजन मेकर हूं, लेकिन मैं जब तक मेरी टीम या जो अप्रूव ना करे मैं डिसीजन नहीं लेता. अगर वो इस तरह कहता, अब आई एम गोइंग टू रिवाइज माई क्वेश्चन, दैट्स हाउ यू लर्न. मैंने उससे उस दिन सीखा है, आज मैंने अप्लाई कर दिया है. व्हाट यू डिड, यू डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक एवर अगेन. ठीक है, जिससे आपने डिसीजन में इनपुट लेना है, लाया उन ना लाया, कोई फर्क नहीं पड़ता. वो 5 लोग 5 लाया, who cares? More people they bring, they are committing more self, they are investing in their time and priority उस हल करने की, आपसे बड़ा काम करने की उतनी हाई हो जाती है ना. ठीक है, अब बिफोर आई आंसर, चूंकि इस वो दूसरी कॉल का, दूसरी नेगोशिएशन का किसी को पता नहीं होगा, मैं वो वाला जो माइक का जवाब है वो मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ. ओके, ये देखें, ये देख लें. ठीक है, ये मुझे जवाब भेजा. आई वांट टू थैंक यू फॉर योर टीम, फॉर योर टाइम एंड अटेंशन टू द डिटेल इन योर अप्रोच. आफ्टर अ लेंथी डिबेट विद माय पार्टनर, with my team, we have decided not to take this opportunity at this time. My president and I differ on future approaches, but as a leader, I have to listen to them and give them the chances they request to the Excel. Again, I appreciate your efforts, blah blah blah. दूसरे लफ्ज़ में चाहिए, डील खराब होगी ना, होगी कि नहीं? Look at how they communicate effectively कि मैंने किस बेसिस पे आपको ना कर रहा हूँ. लेकिन ये डील खत्म नहीं हुई अभी, यहाँ से तो शुरू होती है असल बात. अब मैंने इसको जवाब भेज दिया है ऑलरेडी. मैंने कहा थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई, ब्ला ब्ला ब्ला, जस्ट क्यूरियस व्हाट पार्ट ऑफ दिस होल थिंग दे आर सेइंग नो टू यू, नो ऑन दिस वन. वो असल बात क्या है जिसकी बेसिस पे नो कर रहे हैं, वो क्या है? आई डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट, वो मैं हो अच्छा डील खराब होगी ब्ला ब्ला, फिर तो मैं अभी कॉल भी नहीं ला सकना, मैं तो 3 दिन रोंदा रहना सीखे हैं. मसला ही कोई नहीं. नहीं, जिथे ना करी उत्थे तो गल खत्म हुई, उत्थे तो गल शुरू होनी. ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੈ. ਹਾਂ, ਇਬਰਾਰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ. इबरार सही कह रहे हैं या नहीं? नहीं कह रहे हैं सर, यहाँ पे जैसे कहते हैं. हाँ, मेरे ना रिवर्स है, ना करके ना की नहीं तो फंसे नहीं. मेरा 80% बिजनेस ना से आता है, हाँ से नहीं आता. 80% is good. I can't convert everybody. पॉसिबल ही नहीं है. अगर 80% ना वाले को हाँ में कन्वर्ट करें, इज इट अ गुड नंबर? आई थिंक ए ग्रेड तो बनता ही है ना. मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ. और अगली बात यह है कि वैसे जैसा बंदा भी उसको फॉलो करेगा, रिजल्ट क्या होगा? 20% होगा, 30% होगा. इवेंचुअली ही मे इवन सरपास मी टू मेक इट 100%, 99%. हु केयर्स? वो कुछ ना कुछ तो होगा ना. वो किसी का लोअर है, किसी का ज्यादा है, उसका अपना लेवल है, उसको वो कैसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर रहा है, ये उसमें पर्सनल लेवल पे आता है. नंबर हर के अपने अपने हैं, 0 भी हो सकता है. जब आपको नहीं पता, मुंह बना के वो की होया है, वो ये क्लाइंट लूज कर लिया, की होया वो मैंने तो जनाब मैंने $1000 मिलना सी, वो नहीं आया. फिर अगले 3 दिन ना रोटी खानी है, ना किसी ने चंगे मुंह ना गल करनी है. इदा ही होता ना फैसल है. सेम एक्टिविटी को आप दूसरों के ऊपर शॉवर कर रहे हो. हाँ, ठीक है. ਉਹ तो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਦੋਸਤ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ. ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਫੈਸਲ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਬਰਾਰ ਦਾ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ठीक है, हाँ. बहरहाल जो भी है, अगर इसका प्रेसिडेंट मेरे साथ होता तो ये डील कन्वर्ट होने के बहुत ज्यादा चांस थे, बहुत ज्यादा चांस थे. गारंटी तो नहीं करते, ह्यूमन बिहेवियर को आप गारंटी नहीं कर सकते. ठीक है, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, पर देयर इज अ पैटर्न एस्टैब्लिश्ड कि अगर आप उसको एंगेज करो तो यू कैन आंसर इट.
उसको मैं ये माइक है जो बंदा, इसको प्रेसिडेंट का लेफ्ट से, उसका नाम जॉन था। मैंने कहा अगर माइक कर ले जॉन, अगर आपने सोचा नहीं करना, मैंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आगे से मुंह पे मार देनी उसी वक्त। अगर आप ये वाली इतनी अच्छी डील को आप ना करोगे तो उसकी बेस क्या होगी, अभी मुझे बताओ। वो कहेगा इसमें ये मसला है इसलिए मैं हाँ नहीं करूंगा। आई एम ग्लैड यू सेड दैट, यू नो, उस क्योंकि आप उसका पास्ट एक्सपीरियंस है ना किसी जगह से, दैट गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस दैट इशू। ठीक है, तो ये अगर वो ओपन होके मुझे ना का वजह बता देगा, मैं उसको कहूंगा forget about all the deal, I don't even need your business, come on a call and let's discuss this all over again। ठीक है, वो आएगा, वो कॉल स्केड्यूल करेगा, जो हमारी पिछली कॉल है उसकी रिकॉर्डिंग की कॉपी में दे दूंगा कि ये कॉल वॉच करके आना। अब उसको पता होगा मैंने माइक को उसकी वैल्यू कैसे एक्सप्लेन की हुई है। अभी तो माइक ने खुद कम्युनिकेट किया ना, कॉल की कॉपी तो मेरे पास है, आई डोंट सेंड अ कॉल टू एनीवन। ठीक है, अब मैं उसको कहूंगा जॉन है, जॉन को भी तू कॉल वॉच करके आना, आधे घंटे की कॉल है, कौन सा मसला है। अच्छा, उससे बहुत सारे एड्रेस जो कंसर्न है वो माइक ने इफेक्टिवली उसको कम्युनिकेट किए, लेकिन मैंने तो उसके एड्रेस किए हुए ना सारे, मुझे तो पता है, जिसमें उसका जीरो रिस्क है। अब अगला रिस्क उसका ये है कि ये $5,000 $4,500 वट एवर एक्स अमाउंट, आई डोंट रियली केयर अबाउट द अमाउंट। मैं कहना जॉन हाउ अबाउट दिस वन, डोंट इवन पे मी, आई कुड बी अनदर स्कैमर, स्वीट टॉकर। मैं यूज करता हूँ ना अपने लिए वर्ड स्वीट टॉकर, क्या मैं अच्छी अच्छी बातें करके पैसे निकाल के हो गया, यही करते हैं ना सारे लोग। डोंट ट्रस्ट मी फॉर एनीथिंग, इनफैक्ट इफ आई आस्क यू मनी डोंट एवर पे मी, हाउ अबाउट दिस वन। अब आपका जीरो रिस्क है, आप काम करने को तैयार है, कहता हाँ मैं करने को तैयार हूँ। Why not send this money to escrow account and attorney's account? They only release once I deliver the results. Is that okay with you? उसमें ना क्या करेगा है, खत्म होगी ना बात सारी। अगली बात यह है कि मुझे पैसे चाहिए भी नहीं। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए उसका। I want their skin in the game। आप लोगों ने काम करना है, मैंने आपको पैसे पहले देने हैं या बाद में देने हैं, काम करा के देने हैं या बाद में पहले देने हैं, बताएं। किसी को मैंने पहले पैसे दिए हूँ, मैं आई नेवर पे एनीबॉडी ऑन अ फ्रंट, नॉट इवन अ डॉलर। आपने रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया, अवैस ने भी कर दिया, फैसल ने भी कर दिया, इब्रार ने भी कर दिया, 97 अदर जो लोग हैं वो सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सारों को सारे रिजल्ट दे दिया, तो उसी के पैसे मिलने हैं ना। आपका रिजल्ट काम का मतलब ये मैं इतने मैसेज भेज दिए, मैं तो उसका जो रिजल्ट आया उससे पैसे देने हैं ना, यही है ना। जो रिजल्ट क्या आएगा, क्लाइंट को जो प्रॉमिस किया था वो डिलीवर हो गया, यही रिजल्ट है और क्या है। वो आएगा जो अटर्नी ने पैसे रिलीज कर देने, मैं कहना देखो ये सारा कुछ हम डिलीवर कर दिया, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, आपको आपका पोर्शन मिल जाएगा, मेरा पोर्शन मेरे पास आ जाएगा, उसने पैसे अटर्नी रिलीज भी कर देने, इसमें किसी को कोई मसला है किसी को। हमारा जो डिलीवरी पोर्शन है वो भी उसके एस्क्रो से अलाइंड है ऑलरेडी, इसमें किसी को मसला ही नहीं है। जिसने कुछ नहीं डिलीवर किया उसको 0 मिलना है, जिसने 1% डिलीवर किया उसको 1% मिलना है, जिसने 90% डिलीवर किया उसको 90% मिलना है। कंपनसेशन उसके रिजल्ट बेस है सारी, इसमें कोई इशू तो नहीं है ना किसी को। तो फिर इसमें वो नहीं, क्योंकि यू डोंट लुक राइट, सो आई डोंट वांट डील विद पाकिस्तानी पीपल, मोहम्मद सिद्दीक व्हाटएवर, आई कांट हेल्प इट, यू नो, आई कांट रिप्लेस माय सेल्फ, दैट्स अ गिवन। ठीक है, अगर वो कोई बात है तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर जो पर्सनल कोई सिचुएशन हो गई या मतलब आई डोंट लाइक द रेड शर्ट, आई कांट हेल्प इट, यू नो। हाँ, आप बात कर रहे हो कि ये वैल्यू नहीं मिलेगी, क्वालिटी लो होगी, ये स्कैम हो सकता है, आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट मनी विद 10 अदर पीपल, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटएवर दैट इज, that's gone. There's a zero chance I can't address that one because I help them to focus on the process, not on me. अब मेरी जगह पे फैसल बैठा तो यही प्रोड्यूस करेगा, अबरार बैठा तो यही प्रोड्यूस करेगा, अवैस बैठा तो यही प्रोड्यूस करेगा, अगर प्रोवाइडेड वो प्रोसेस को उस तरह फॉलो करे। इसका बंदे से ताल्लुक नहीं है, कहना ये चाह रहा हूँ। अब मेरा गोल क्या है अभी कि ये वाला प्रोसेस आप सब में इम्प्लांट हो जाए, जैसे नहीं बाईपास सर्जरी करते, इम्प्लांट हो जाए ना। आप कभी झूठ बोलो किसी से, ना आपने वो कमिट करना है जो आपने डिलीवर नहीं कर सकते। 1% भी डाउट है तो आप उसको कम्युनिकेट कर दो,
तो बंदे को क्या मसला है आपसे? The moment you know I can't deliver it, tell the other party right away. Not let's say मैंने प्रॉमिस किया कि हफ्ते बाद मैं ये करूंगा, मैं आपको ये दूंगा, आपको 2 दिन बाद पता चला गया, लगता है ये काम नहीं होना, इसमें टाइम और लग जाना है, मौलाना फजल मान ने माल रोड बंद कर दी है, अब मैं वो काम नहीं कर सकता, बिजली नहीं है, बला whatever the reason is, the moment you know I can't deliver it, communicate right away. On the other side आपको माइंड कर देगा, वो क्लाइंट लूज हो जाएगा, यही आपकी सोच है ना, और क्या है? और जब आखिर में करोगे तो लूज हो जाएगा, ये मैं बता दूं, जब पहले बताओगे उसको तो वो लूज नहीं होगा। इट्स अ रेयर चांस कि वो बंदा आपसे लूज हो जाए, रेयर। यू नो व्हाई? एज ए ह्यूमन बीइंग we always accommodate other people provided they are honest with you. और प्लस आपने अगर वो उसको वीक वो उसमें 2 दिन की डिले या जो भी जो रिवाइज्ड जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो रिवाइज्ड होगी ना, एक्सपेक्टेशन रिवाइज हो गई है, अगर वो रिवाइज को वो नहीं कर सकता तो क्या करेगा? वो आपको बता देगा, डोंट वरी अबाउट इट, आई एम गोइंग टू मूव विद समबडी एल्स, दैट्स ओके। इसका फायदा पता क्या है? अगला जब काम आएगा तो फिर वो दोबारा आपके साथ आ जाएगा, क्योंकि उसको ये पता है कि बंदा ठीक था। अब आपने ट्रांजैक्शन से फोकस होके छुड़ा के अपने वैल्यू पे, इंटेग्रिटी पे फोकस कर दिया। द मोमेंट somebody is focused with you on the integrity, you never lose relationship ever. ट्रांजैक्शन से अपने आप को हटा दें, ट्रांजैक्शन से हटेंगे तो यू कैन मेक अ हेल लॉट ऑफ मोर मनी फ्रॉम दैट पर्सन फॉर एवर, ये भी मैं बता दूं। क्लियर होगी बात? समझ आई कि अगली भी गई? क्लियर हो गई है? कंफ्यूजन नहीं है? अबरार, अबरार आप किस शहर में? सर मैं चनियोट। चनियोट? और चनियोट का तो फर्नीचर ही बड़ा अच्छा है जी सर। किसी जमाने चुंदा से आजकल पता नहीं कितना है। सही है हैं? सही है, ठीक है। नीचे बेहतरीन समझ में लगी है सर। की समझ लगी? सर एक तो अगर आपका पार्टनर है अगर किसी के साथ, तो उनको शुरू में दोनों को ले लो, और यहाँ पे सारी जो इंटेग्रिटी और ट्रांजैक्शन है, ये पॉइंट भी समझ लग गया कि इंटेग्रिटी में फोकस उसका आएगा जब उसको पता होगा कि बंदा जो उनसे डिलीवर करने वाला है। ओके, आई हैव टू रन, द नेक्स्ट इंटरव्यू स्टार्ट, आई एम ऑलरेडी 1 minute लेट। ओके, थैंक यू। ओके सर।